वेलकम एवरीवन। प्रीति, गुड आफ्टरनून। आवाज आ रही है प्रीति मेरी आपको? गुड आफ्टरनून मैम। यस मैम। प्रीति, मैंने आपका कल रीडिंग टेस्ट चेक किया था। ओके, एज कंपेयर टू योर प्रीवियस प्रैक्टिसेस, आपका पिछला रीडिंग प्रैक्टिस काफी इम्प्रूव हुआ है। ओके, सो टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद द स्पीकिंग टेस्ट। ओके, स्पीकिंग प्रैक्टिस के साथ स्टार्ट करेंगे आज। आप अपनी स्क्रीन देख रहे हैं प्रीति? यस मैम। ओके, प्रीति अपनी स्क्रीन पर देखिए। फर्स्ट क्यू कार्ड से स्टार्ट करते हैं। डिस्क्राइब अ टाइम व्हेन यू ट्रैवल बाय पब्लिक ट्रांसपोर्ट। यस मैम। पास्ट का है पूरी तरह से ये क्यू कार्ड। ओके, आपको एक टाइम डिस्क्राइब करना है व्हेन यू यूज्ड पब्लिक ट्रांसपोर्ट टू रीच समवेयर। ओके, या फिर आपने अपनी जर्नी जो थी वो पब्लिक ट्रांसपोर्ट की हेल्प से कंप्लीट की। फाइन। क्यूज देखिए प्रीति, कौन कौन से क्यूज हैं आपको यहाँ पे। सबसे पहला क्यू है व्हेन यू ट्रैवल्ड, कब किया था आपने ट्रैवल। ओके, सेकंड वेयर यू ट्रैवल, कब और कहाँ ट्रैवल किया आपने। What was the purpose of your travel? मेन पर्पस क्या था, किस कारण की वजह से आपने ट्रैवल किया, क्या रीजन था आपका ट्रैवल करने का। ओके, सो दीज आर द थ्री मेन क्यू जिन्हें आपको एक्सप्लेन करना है। अब एक चीज यहाँ ध्यान से देखिए प्रीति, यहाँ पर दो क्यूज ऐसे हैं जो कि नॉन डिस्क्रिप्टिव है और एक क्यू ऐसा है जो कि डिस्क्रिप्टिव है। नॉन डिस्क्रिप्टिव क्यूज कौन से हैं? व्हेन यू ट्रैवल्ड, कब किया था ट्रैवल, एंड वेयर यू ट्रैवल्ड, कौन सी जगह ट्रैवल किया था आपने। फाइन। तो यहाँ आप बहुत ज्यादा चीजें एक्सप्लेन नहीं कर सकते, सिर्फ आपने टाइम, डेट या फिर आपने मंथ को एक्सप्लेन करना है, या आप बता सकते हैं कि आपने कुछ महीने पहले जर्नी अपनी की थी। फाइन। कहाँ ट्रैवल किया था आपने, उस जगह का नाम बताना है। दैट्स So these two first cues are non-descriptive. आप यहाँ पे explanation ज़्यादा नहीं दे सकते। But if we talk about the cue number 3, what was the purpose of your travel? आपके travel करने का purpose क्या था? तो यहाँ पर descriptive है situation. आप इसको explain कर सकती हैं। यहाँ पर आपने proper एक story बनानी है, proper purpose बनाना है। Okay? Are you getting it? यस मैम। ओके, तो अभी आई एम गोइंग टू गिव यू 1 मिनट। फाइन, आप 1 मिनट लीजिए एंड देन आप दोबारा से अपनी स्पीकिंग जो है वो स्टार्ट करेंगी। फाइन। ओके मैम। ओके, प्रीति, योर 1 मिनट स्टार्ट्स नाउ। Prepare your thoughts and write down the keywords only the main key points. Okay, Preeti, your 1 minute is over now. Please start. पहले मुझे बताइए कि आपने क्या क्या की पॉइंट्स लिखे हैं, कौन कौन से मेन बुलेटिन्स हैं आपके, वो मुझे बताइए। मैम की पॉइंट्स बनाने के स्टार्टिंग करनी नहीं, आप की पॉइंट्स बताइए कि आपने कौन कौन से की पॉइंट्स लिखे हैं। कितने की पॉइंट्स लिखे हैं टोटल? मैम 3 लिखे हैं। ओके फाइन, कौन कौन से? मैम वेंट टू अमृतसर,
Okay. Ma'am, main purpose of the my UGC exam. Okay. Ma'am, ऑलराइट, it तो आपको स्टार्ट करना है। सबसे पहले एक जर्नल इंफॉर्मेशन देनी है आपको अपने क्यू कार्ड के ऊपर। ओके, ट्रैवलिंग बाय पब्लिक ट्रांसपोर्ट। सो आप एक जर्नल सी इंफॉर्मेशन के साथ स्टार्ट कीजिए अपना क्यू कार्ड। आई एम गोइंग टू give you 2 minutes. Okay, you have to speak for at least 2 minutes. Okay, start speaking please. public transport is in present day is very useful for every person, because sometimes these travels are useful for other person, but 2 years ago I traveled by public transport by bus. I went to Amritsar because my main purpose of the I could give the exam of my UGC. Okay, continue. Because it was started was 9 a.m. to the, Yes. because that time there were many students around. It was very difficult to find out the roll number list. Preeti, this is about your travel. Okay, you have to describe a situation when you travel somewhere with the help of public transport. Okay, तो सबसे पहले तो यहाँ पर एक जर्नल इंफॉर्मेशन पब्लिक ट्रांसपोर्ट के ऊपर बनानी है आपने। ओके, ट्रांसपोर्टेशन के ऊपर आप बता सकते हैं। आप अपने बारे में अगर बताना चाहो तो आप बता सकते हो कि आई एम अ वेरी एडवेंचरस पर्सन, आई लाइक टू ट्रैवल अ लॉट। There are many means of transport in my hometown through which I can commute from one place to another. Here I want to discuss a time when I traveled with the help of public transportation. Okay, this is all. These 3-4 lines are all about your journal information. Okay, आपने इसको अपने क्यू कार्ड के साथ आप लिंक करना। फाइन। अब यहाँ पर सबसे पहले जो है क्यू है when you travel. ओके, तो आपने कहा था कि 2 years ago you traveled. Yes, ma'am. फाइन, तो ये बहुत लंबा टाइम हो गया, आप इसको थोड़ा सा प्रिसाइज कर दीजिए। आप बोल दीजिए few months back I traveled to Amritsar. I remembered that day. It was a hot sunny day. I traveled with my cousin. आप अब यहाँ ये क्यों नहीं है, उन्होंने नहीं पूछा with whom you traveled, किसके साथ ट्रैवल किया था आपने। फाइन, बट टू कवर द टाइम, 2 मिनट का टाइम कवर करने के लिए यू एड दिस इंफॉर्मेशन। आप बता सकती हैं, किसी का भी नाम ले सकते हो, आप बता सकते हो यू ट्रैवल्ड विद योर पेरेंट या मदर या फादर के साथ ट्रैवल किया था, यू ट्रैवल्ड देयर विद योर फ्रेंड। देन उसके बाद आपने बताना है कि वेयर यू ट्रैवल्ड हो चुका है, आपने बता दिया है कि कहाँ अमृतसर ट्रैवल किया था एंड यू ट्रैवल्ड with your brother. It was a hot sunny day. Okay, now come to the purpose. What was the purpose of your travel? क्या purpose था, इसको पूरी तरह से आपने explain करना है। Okay, आपने क्या आइडिया बताया था? If you are not able to describe it in English, आप मुझे अपनी स्टोरी हिंदी में बताइए so that I can tell you कि आप इसको कैसे डिस्क्राइब कर सकते हैं। मैम एग्जाम के बारे में बताना था कि एग्जाम था स्टार्टिंग इवनिंग से स्टार्टिंग हुआ था, सॉरी मॉर्निंग से स्टार्टिंग होना था और इवनिंग को पूरा खत्म होना था। 3 एग्जाम थे। Okay. It's one of it is मैम आवाज नहीं आ रही। एग्जाम था, आपने वो बताना है। सुनाई नहीं आपने दे रहा पहले बताया कुछ। था कि एग्जाम था आपका।
आपने वही चीज कंटिन्यू करनी है, आपने बताना है कि किस चीज का एग्जाम था। अगर 3 एग्जाम्स थे आपके एक दिन में, आपको 3 एग्जाम्स में कौन से, ओके, बताएंगे कि आपको पहुंचने में कितना टाइम लगा, जो you traveled from अमृतसर, यहाँ से आपने जर्नी जो थी, कितना टाइम लगा आपको वहाँ पहुंचने, फाइन। फिर आपने ये बताना है कि ड्यूरिंग योर ट्रैवल आपने क्या क्या किया। आप बता सकते हैं दैट जर्नी वाज वेरी कंफर्टेबल, ओके। आपने लोकल बस के थ्रू ट्रैवल किया था, दैट वाज अ फुली एयर कंडीशन बस, काफी ज्यादा वो फैसिलिटेट था, दैट इज फुली एयर कंडीशन, द जर्नी वाज वेरी कंफर्टेबल, यू रीच देयर बिफोर टाइम, वहां पर टाइम से पहले पहुंच गए थे आप, ताकि आपको रजिस्ट्रेशन करवाने में टाइम नहीं लगा, आपका बहुत टाइम सेव हो गया, एंड आप इजीली वहां पर जाके अपना जो पेपर था वो आसानी से दे सके, ओके। इन द एंड आपने ये बताना है, सजेशन देना है कि और कौन कौन सी चीजें हम बेसिकली जब एंड करते हैं, जैसे आपने एक जर्नलाइज्ड इंफॉर्मेशन के साथ अपना क्यू कार्ड स्टार्ट किया, वैसे ही आप एक जर्नलाइज्ड इंफॉर्मेशन के साथ अपने क्यू कार्ड को एंड करो, ओके। यू हैव टू गिव अ सजेशन, आप कोई भी सजेशन दे सकती हैं। पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन के ऊपर आप क्या सजेशन दे सकते हो? Ma'am, it is very convenience for every person. ओके, आपने कहा कि दिस इज द कन्वीनियंट एंड मोस्ट कंफर्टेबल वे टू रीच फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, एज इट इज कॉस्ट इफेक्टिव, ज्यादा पैसे नहीं खर्चने पड़ते हैं कहीं ट्रैवल करने के लिए, ओके, एंड इट इज द एनवायरमेंट फ्रेंडली वे टू रीच द डिजायर्ड प्लेस। इसके बाद आप यहाँ चाहें तो आप ये सजेस्ट भी कर सकती हैं कि लोकल अथॉरिटीज एंड गवर्नमेंट should improve the condition of public transports and encourage people to use public transport instead of their personal vehicles. Okay, so this is about your cue card. All right, next move to the next cue card. Second cue card पे move करते हैं. Describe an educational trip you went on in your school days. आपने एक एजुकेशनल ट्रिप के बारे में बताना है जो आपने अपने स्कूल डेज के टाइम पे किया था, ओके। एजुकेशनल ट्रिप मींस कि पूरी तरह से एक ऐसा ट्रिप है जहाँ पे आपको स्कूल अथॉरिटीज के थ्रू ऑर्गेनाइज किया गया था, यहाँ पर आपने एजुकेशनल पर्पस के थ्रू आप वहां पर विजिट किए, ओके। हैव अ लुक ऑन द क्यूज, वेयर वाज द ट्रिप, द फर्स्ट क्यू, कहाँ पे था आपका ट्रिप, व्हाट यू डिड एंड व्हाट यू लर्न, आपने क्या किया और क्या सीखा आपने उस ट्रिप से, who went with you, आप किसके साथ गए थे वहां, ओके, and how you felt about it, आपको कैसा फील हुआ इस ट्रिप को, उस ट्रिप पे जाकर, ओके। आई होप दिस क्यू कार्ड इज क्लियर। सबसे पहले आपने यहाँ पर एक जनरल इंफॉर्मेशन देनी है एजुकेशनल ट्रिप के ऊपर, फाइन। आप बता सकते हैं जैसे आप यही दूसरी स्टेटमेंट जैसे हमने पिछले क्यू कार्ड में यूज की थी, वैसे ही उसी तरह से आप कोई स्टेटमेंट यूज कर सकते हो। School days were one of the most memorable part of my life. I enjoyed a lot in my school days. I went many places with my friends and with my school teachers, as well as I attend many school trips. Here I want to discuss one of the most memorable educational trip that I went on during my school days. Okay, this is about the journal information. फिर उसके बाद आपने बताना है कि कहाँ गए थे ट्रिप पे, वेयर वॉज द ट्रिप, कहाँ का ट्रिप था, ओके। इसमें कुछ चीजें ऐड करो, बताइए कि आपने कितने दिन का ट्रिप था ये, इट्स अ 1 day ट्रिप, 2 days ट्रिप,
तो वहाँ अगर 2 डेज का है तो आप बता सकते हो कि आपकी स्कूल अथॉरिटी ने कुछ ऑर्गेनाइज किया था, स्टे वहाँ ऑर्गेनाइज करवाया था वहाँ पे आप सभी स्टूडेंट्स के लिए। व्हाट यू डिड एंड यू लर्न, अब आपने यहाँ पे बताना है कि आपने उस ट्रिप में क्या किया और आपने क्या सीखा। फाइन, आप बता सकते हैं कि कोई अगर साइंस एग्जीबिशन के बारे में आप बता सको कि आपके स्कूल ने एक ट्रिप ऑर्गेनाइज किया था जो कि एक साइंस फेयर के ऊपर था। फाइन, that was held near your town, आपके टाउन के पास ही आउटस्कर्ट्स में वो साइंस एग्जीबिशन जो था वो लगाया गया था। ओके, एंड यू लर्न अ लॉट ऑफ थिंग्स फ्रॉम दैट ट्रिप। वहाँ पे आपने बहुत सी पिक्चर्स जो थी वो कैप्चर की जो कि साइंस की अलग अलग स्पीशीज एक्सपेरिमेंट्स के ऊपर बेस्ड थी। फाइन, वो एक्सपेरिमेंट्स आपको आपकी स्टडीज में वो लाइव एक्सपेरिमेंट्स आपको बहुत काम आए जो कि आपने अपनी प्रैक्टिकल स्टडीज में यूज किया इन फ्यूचर। फिर उसके बाद बताना है हु वेंट विद यू, आपके साथ कौन कौन गए थे। ओके, डेफिनेटली आप यहाँ पे अपनी सारी फ्रेंड्स का अपनी पूरी क्लास की बात बता सकते हैं। few of the teachers were there with you, and last है how you felt about it, आपको कैसा लगा। ओके, आपको कैसा लगा, आपने क्या फील किया, आपने ये सारी चीजें इस क्यू में ऐड करनी है। ओके, सो आइडियाज क्लियर टू यू, आपको पता चल गया कि इस तरह से आप इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं। Yes, ma'am. ओके फाइन, नाउ टेक योर टाइम, अपना टाइम लीजिए एंड क्यू कार्ड प्रिपेयर कीजिए। मेक श्योर मैंने आपको सारे कीवर्ड्स बता दिए हैं। ओके, नाउ Yes, ट्राई टू स्पीक, स्टार्ट विद जनरल इंफॉर्मेशन, देन बताइए ट्रिप के बारे में, कौन कौन गया था वहां पर, कितने दिन का ट्रिप था। ओके, आप उस ट्रिप में जाने के लिए बहुत एक्साइटेड थे, आपने अपने पेरेंट्स से परमिशन ली वहां जाने के लिए, योर पेरेंट्स अलाउड यू टू वेंट देयर। फिर उसके बाद आपने बताना है क्या क्या चीजें सीखी वहाँ, किस चीज का एग्जीबिशन था या किस चीज का वो ट्रिप था। आप बता सकते हो आप साइंस सिटी गए थे, वो चीज भी बता सकते हैं, वहाँ जो जो चीजें हैं वो एक्सप्लेन कीजिए आप। ओके, या आप बता सकते हो आप किसी हिस्टोरिकल म्यूजियम में गए थे। ओके, वहाँ पे आप एग्जीबिशन देखा आपने जहाँ पे एशियंट आर्ट और वहाँ पे बहुत सी टूल्स जो थे उनका एग्जीबिशन था। ओके, ये सारी चीजें आप अपनी क्यू कार्ड में एक्सप्लेन कर सकते हैं। फाइन, okay. ओके, नाउ टेक योर टाइम एंड प्रिपेयर योर क्यू कार्ड। हम स्टार्ट कर दें। नो, अभी प्रिपेयर कीजिए, अभी आपके पास टाइम है। प्रिपेयर योर क्यू कार्ड फर्स्ट। ओके प्रीति, 1 minute is over, start speaking. Education. Yes, start speaking Preeti. अगर आपको कोई डाउट है क्वेश्चन में, मैं दोबारा से इसको समझा देती हूँ। आपने एक एजुकेशनल ट्रिप बताना है जो कि आपने अपने स्कूल डेज में वो ट्रिप अटेंड किया था। ओके, इस क्यू कार्ड में आपको बेसिकली कुछ चीजें पूछी गई हैं, दैट इज वेयर वाज द ट्रिप, कहाँ पर था वो ट्रिप, व्हाट यू डिड, आपने क्या किया उस ट्रिप में, एंड व्हाट यू लर्न, एंड आपने वहां से क्या सीखा। तो आप ये बता सकती हैं कि वहां पर कोई एग्जीबिशन की बात कर सकती हैं, आपके स्कूल ने एक एग्जीबिशन ट्रिप
ऑर्गेनाइज करवाया था आपके सभी स्टूडेंट्स के लिए, आपके स्कूल के सभी स्टूडेंट्स के लिए। आपकी क्लास के सारे बच्चे वहां पे गए थे, वहां आप भी थे। ये जो एग्जीबिशन था आप बोल सकते हो किसी म्यूजियम में ऑर्गेनाइज हुआ था, या आप साइंस सिटी के बारे में बता सकती हैं कि आप साइंस सिटी गए थे, वहां पे आपने बहुत सारी चीजें देखी। ओके, वहां पे आप एनिमल स्पीशीज, प्लांट्स, डोम थिएटर की बात कर सकते हैं, लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज की बात कर सकते हो। आपने वहां पे ग्लोब, यूनिवर्स एंड सोलर सिस्टम, ये सारी चीजें आप वहां बता सकती हैं। दैट इज वेरी नॉलेजेबल फॉर your information or your knowledge, your education, your subject, ये सारी चीजें आप वहां बताकर देन आप बताएंगी who went with you, ये बीच में ही कवर हो चुका। how you felt about it, आपको कैसा लगा। ओके, आपने क्या फील किया आप बता सकती हैं। it was one of the most memorable educational trip. I remember it was the first time I went somewhere with my friends. We all enjoyed a lot. एंड इन द एंड लास्ट में दोबारा से सजेशन देकर आप अपनी क्यू कार्ड को कंप्लीट करोगे। ऑल इन ऑल, या फिर ऑन द एंडिंग नोट, आई वांट टू सजेस्ट that schools must organize such educational trips for all the students, and it must be compulsory from them so that they can rejuvenate and experience something new apart from their daily schedule. Okay, so this is your second cue card. Next, move to cue card number 3. नेक्स्ट क्यू कार्ड देखिए, थर्ड क्यू कार्ड। डिस्क्राइब एन इम्पोर्टेंट बिल्डिंग ऑफ योर टाउन। आपने यहाँ पे अपने टाउन की, अपनी सिटी की इम्पोर्टेंट बिल्डिंग के बारे में बताना है। ओके, क्यूज क्या है, विच इज द बिल्डिंग, कौन सी बिल्डिंग है वो, बिल्डिंग के बारे में बताना। दिस इज कम्प्लीटली द नॉन डिस्क्रिप्टिव। आप इसमें बिल्डिंग का नाम पूछा है तो आप इसको ज्यादा इलेबोरेट नहीं कर सकते, सिंपली आप इसका नाम बताएंगे। फिर आपने बताना है वेयर इट इज, एरिया, जगह पूछा है कि कहाँ पर वो लोकेट करता है, उसकी लोकेशन को आपने बताना है। आपने यहाँ पर बताना है, डिस्क्राइब करना है मीटिंग के बारे में। आपने बताना है वो बिल्डिंग कौन सी है। ओके, फिर आपने यहाँ पर बताना है कि वो कहाँ पर लोकेट करती है, वो बिल्डिंग कहाँ पर है। एरिया बताना है प्रॉपर, आप बता सकते हैं दिस बिल्डिंग इज लोकेटेड एट द सेंटर ऑफ द सिटी और हार्ट ऑफ द टाउन। सराउंडिंग, उसके साथ ही सारा सराउंडिंग बताना है आपने कि जहाँ वो बिल्डिंग लोकेटेड है वो सराउंडिंग कैसा है उसका। ओके, उसके आसपास कौन कौन सी जगह है, वहां पे आपने चीजें ऐड करनी है सो दैट यू कैन कंप्लीट 2 minutes ऑफ स्पीकिंग। देन हाउ यू नो अबाउट दिस बिल्डिंग, आप कैसे जानते हैं उस बिल्डिंग के बारे में। ओके, आप बता सकती हैं दैट इज वन ऑफ द मोस्ट रिनाउंड बिल्डिंग ऑफ माय सिटी, बहुत पुराना और बहुत ही रिनाउंड बिल्डिंग है वो आपकी सिटी का। ओके, इसके साथ ही साथ आप बताएंगे कि उस बिल्डिंग में कौन कौन सी चीजें हैं, व्हाई इट इज इम्पोर्टेंट, क्यों ये बिल्डिंग इतनी इम्पोर्टेंट है। आप कोई भी किसी भी बिल्डिंग के बारे में बता सकते हो। आप किसी रिलीजियस प्लेस की बात कर सकती हैं, आप बता सकती हैं कि ये एक रिलीजियस प्लेस है, either it is temple or gurdwara or any other religious place. Other than this, आप यहाँ बता सकते हो कि ये बिल्डिंग जो है इट्स अ शॉपिंग मॉल। ओके, वर्टिकल बिल्डिंग है या हॉरिजॉन्टल बिल्डिंग है, कितनी फ्लोर्स है वहां पर ये बताएंगे। अगर तो आप किसी मॉल के बारे में बता रहे हो जो कि आपके एरिया का सबसे ज्यादा फेमस, आप बोल सकते हो कि या लेटेस्ट इक्विपमेंट्स के साथ डिजाइन किया हुआ है, उसका आउटर स्ट्रक्चर बहुत ही ज्यादा एस्टॉनिशिंग है। ओके, वहां पे बहुत सारे ब्रांड्स अवेलेबल हैं। whenever you get time, आप वहां जाकर शॉपिंग करना पसंद करते हो अपने फैमिली एंड फ्रेंड्स के साथ। देयर आर थिएटर्स आल्सो। ओके, सिनेमा हॉल्स है वहां पे जहाँ पे आप अपने फ्रेंड्स के साथ मूवी देखने जाते हैं। तो ये सारी चीजें आपने वहां पर एक्सप्लेन करना है। ओके, इसके अलावा और भी बहुत सारी चीजें आ जाएंगी। जब आप आउटर एरिया बता रहे हैं, यू कैन ऑल्सो एक्सप्लेन अबाउट द पार्किंग,
कि वहां पे देयर इज एम्पल पार्किंग फैसिलिटी। एम्पल का मतलब है ह्यूज पार्किंग फैसिलिटी, मतलब बहुत बड़ी पार्किंग फैसिलिटी है। या अगर आपको इसको थोड़ा सा और इलेबोरेट करना है तो आप बोल दीजिए कि इट हैज अ मल्टी स्टोरी पार्किंग फैसिलिटी। मल्टी स्टोरी मीन्स कि पार्किंग जो एरिया है वहाँ स्टोरीज बनी हुई है। There are 2-3 stories only for the parking because बहुत ज़्यादा famous है, so people from the outskirts and nearby regions also come and spend their good quality time at that place. ये सारी चीजें आप अपने क्यू कार्ड नंबर 3 में एक्सप्लेन कर सकते हैं। Okay, are you getting it? समझ में आ रहा है आपको कि किस तरह से आपने बताना है कि एक इम्पोर्टेंट बिल्डिंग जो कि आपके टाउन में, ओके, वो इम्पोर्टेंट बिल्डिंग कोई भी हो सकती है। वो बिल्डिंग कोई टेम्पल हो सकता है, कोई किसी भी तरह का कोई रिलीजियस प्लेस हो सकता है। वो कहाँ पर लोकेट है, आपने एरिया बताना है कि कौन से एरिया में आपका वो लोकेट करता है। ओके, फिर आप बताएंगे आप उस बिल्डिंग के बारे में कैसे जानते हैं। आप बता सकते हैं कि वो बहुत फेमस है एंड इन द एंड व्हाई यू थिंक इट इज इम्पोर्टेंट। तो आपने मैंने बहुत सी चीजें बताई हैं, पार्किंग फैसिलिटीज से लेकर उसका डिजाइन, उसका स्ट्रक्चर, वहाँ पे जो शॉप्स हैं, वहाँ पे जो ब्रांड्स अवेलेबल हैं, थिएटर्स हैं, वहाँ पे ई टेबल्स हैं, वहाँ पे बहुत सारे रेस्टोरेंट्स हैं जहाँ पे जा सकते हैं, कैफे हैं। सो ये सारी चीजें आप बता के अपने क्यू कार्ड को आसानी से 2 मिनट तक का बना सकते हो। ओके, इवन अगर ये सारी चीजें ऐड करोगे यू कैन कंफर्टेबली स्पीक फॉर एटलीस्ट 2 मिनट। ऑलराइट, नेक्स्ट, फोर्थ क्यू कार्ड, describe a film you would like to share with your friends। आपने एक ऐसी फिल्म के बारे में बताना है जो आप अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना चाहेंगे। ओके, सो द की point of your cue card is the film। ओके, आपने फिल्म के ऊपर एक बहुत ही जर्नलाइज्ड एक सिंपल सी स्टेटमेंट बनानी है सो दैट यू कैन रिलेट योर क्यू कार्ड विद द स्टोरी। ओके, देन आपने यहाँ पर बताना है वेयर यू वॉच्ड इट, कहाँ पर देखा आपने, आपने जगह बताना है। ओके, आप बता सकते हैं कि आपके टाउन में एक बहुत ही फेमस थिएटर है, मल्टीप्लेक्स है, वहां पर आपने इस मूवी को देखा था। व्हाट इट इज अबाउट, बेसिकली किस चीज के ऊपर बेस्ड थी ये मूवी। इज इट अ बायोग्राफी ऑफ अ पर्सन, क्या ये किसी पर्सन की बायोग्राफी थी। इज इट एन एक्शन मूवी, क्या ये एक्शन मूवी थी। इट्स अ कॉमेडी फिल्म थी, और इट इज अ फैमिली ड्रामा, या ये इट वाज अ फैमिली ड्रामा था। ओके, देन who you watched it with, आपने किसके साथ मूवी देखी थी। ओके, who were with you at that time, कौन कौन थे आपके साथ उस टाइम पे। you can say you went and watched this movie with your family, आपने फैमिली के साथ देखी थी, but now you want to share it with your friends, because make sure ये नहीं कहना कि आपने फ्रेंड्स के साथ देखी थी। it is better to say कि आपने अपनी फैमिली के साथ देखी थी, but now you want to share it with your friends। okay, why you want to share it with your friend, अपने फ्रेंड के साथ क्यों शेयर करना चाहते हैं आप, अपने रीजन देना। ओके, आप बता सकते हैं कि आपके फ्रेंड जो हैं he loves to watch movies but he hardly get a time because he has such a busy schedule, he always busy with his work assignment and projects। आप बता सकते हैं कि आपने ये मूवी रिसेंटली देखी थी, you just recently watched this movie, you felt very entertained after watching it। and then आप बताएंगे कि you are planning to visit your friend soon, on that day you will share this movie with him। लास्ट में आप बता सकते हैं I hope as he is a movie lover, this is the comedy movie, जो भी मूवी का उसका जो भी कंटेंट है, जिस तरह की वो मूवी है,
आप बता सकते हैं कि वो उसको डेफिनेटली पसंद आएगा. सब्जेक्ट वाज वेरी गुड. उस मूवी का जो सब्जेक्ट था वो बहुत ज्यादा अच्छा था. ओके, इट वाज फुल एंटरटेनमेंट मूवी. बहुत ज्यादा आपको अच्छा लगा एंड यू स्पेंड योर क्वालिटी टाइम विद योर फैमिली एट दैट टाइम. बट नाउ यू वांट टू शेयर दिस विद योर फ्रेंड. ओके, तो आपने पूरा बताना है कि अबाउट द मूवी, क्यों अपने फ्रेंड के साथ शेयर करना चाहते हो. फिर आपने बताना है कि उस मूवी में भी हो सकता है कि आप बता दें कि उस मूवी में कुछ ऐसा है या मूवी का कुछ थीम ऐसा है जो कि फ्रेंडशिप के रिलेटेड है, तो वो चीज ऐसा भी आप स्टोरी को प्लॉट कर सकते हैं. ओके, दिस इज द फोर्थ क्यू कार्ड. नेक्स्ट स्टार्ट विद द फिफ्थ क्यू कार्ड, द लास्ट वन. Describe a school you went to in your childhood. Describe a school you went in your childhood. Where it was. आपने बताना है कि स्कूल के बारे में बताना है. आपने अपने स्कूल को एक्सप्लेन करना है. वेरी इजी, आप अपने स्कूल को इजीली एक्सप्लेन कर सकते हैं. ओके, इट्स ऑल बेस्ड ऑन योर पास्ट एक्सपीरियंस विद योर स्कूल. द फर्स्ट क्यू, वेयर इट वाज. बताना है आपने कहाँ था आपका स्कूल. ओके, और इट इज स्टिल लोकेटेड एट द सेम प्लेस. What it was like, देखने में कैसा दिखता था. Its design, its structure, it's a multi-storied building or it's a vertical or horizontal building. What you learned there, आपने क्या सीखा उस स्कूल में. आप यहाँ बहुत सी चीजें बता सकते हैं. आप बता सकते हो कि आपके स्कूल, आपके पूरे स्कूल में जो जो चीजें आपने एक्सपीरियंस की, आप वो सारी चीजें बताएंगे. टीचर्स, टोटल क्लासरूम्स, facilities that you had at the time. फिर आपने बताना है कि आपने कौन कौन से सब्जेक्ट्स वहाँ पे पढ़ाए जाते थे. फाइन. व्हाट क्वालिटी ऑफ एजुकेशन यू गॉट फ्रॉम देयर. फिर आपने बताना है कि वहाँ पे एक्स्ट्रा करिकुलम एक्टिविटीज थी तो आप वहाँ पार्टिसिपेट करते थे. फाइन. हाउ यू फेल्ट अबाउट इट, आपको कैसा लगा उसके बारे में. आप बता सकते हैं कि इट वाज वन ऑफ द ग्रेट एक्सपीरियंस ऑफ माय लाइफ टू बीइंग पार्ट ऑफ दैट स्कूल because it is one of the most renowned school in my city. Okay, it's an English medium. ये चीजें भी याद कर सकते हो. It's a co-educational institute or it's a girls high girls school. ये चीजें भी आप वहाँ पर बता सकते हैं. स्ट्रेंथ कितनी थी वहाँ टोटल बच्चों की. How many students were there at that time when you were in the school. ओके, आपका बैच कौन सा था. ये सारी चीजें आप अपने स्कूल को डिस्क्राइब करने के लिए बता सकते हैं. ओके, सो नाउ हियर वी डिस्कस मल्टीपल की पॉइंट्स. दैट इज अबाउट योर स्कूल. वेयर इट वाज, आपने अपने स्कूल की लोकेशन बतानी है और इट्स स्टिल एट द सेम प्लेस. वो अभी भी उसी जगह पर है एंड इट्स वन ऑफ द मोस्ट रेनाउंड स्कूल. नाम बताना है स्कूल का और प्रॉपर एक्सप्लेन करना है. लाइक इट्स अ कोएड, इट्स अ हाई गर्ल्स स्कूल्स और इट्स बॉयज स्कूल्स. ये सारी चीजें आपने वहां पर बतानी. उसके बाद व्हाट इट वाज लाइक, आपका स्कूल कैसा था. इट्स डिजाइन, स्ट्रक्चर बताना है आपने. इट्स अ वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल बिल्डिंग. ओके, हाउ मेनी क्लासरूम्स वर देयर, कितने टोटल क्लासरूम्स थे. हाउ मेनी लैब्स, साइंस लैब, कंप्यूटर लैब्स. ओके, देन आपने यहाँ पर टीचर्स के लिए वहाँ पे देयर वर सेपरेट cabins वहाँ पे थे प्रॉपर उनके लिए. स्टाफ रूम्स वर देयर. ओके, there were 2 or 3 big playgrounds. ये सारी चीजें to explain the structure, the things that you had in your school. What you learned there, क्या क्या चीजें आपने सीखी. Apart from your studies, you can say I learned a lot of things. Okay, uh, when you joined that school, you were very shy type of person, introvert person. But after joining that school, you you will start taking participate. You will start participating on the different co-curricular activities. Okay, ये सारी चीजें आपके उस क्यू कार्ड का पार्ट है. और लास्ट में आपने बताना है कि आपको कैसा लगा. That was a memorable time or a good experience of my life. Fine. So this is about the fifth cue card. Describe a school you went to in your childhood.
Now see, there are few vocabulary words. इसमें क्या करना है आपको, vocabulary words में क्या चीज देखनी है. आज जो हमने क्यू कार्ड किए हैं, this is for all of you, those who are watching this video on YouTube. This is the live video based on speaking cue cards along with some of the important vocabularies. These vocabulary words are mainly for town or city and movies or books. As today we have discussed total 5 cue cards. So these two topics are based on town or city. The first, boarded up shops. Boarded up shops का क्या मतलब है? Shops that are no longer doing business means ऐसी shops, ऐसे stores जो अब काम नहीं कर रहे हैं, तो उनके लिए हम ये word use करेंगे boarded up shops. Second, chain stores. We generally heard this word that means a well-known brand with shops in a multi-cities. Okay, means ऐसे chains जिनके हर city में shop हैं. Okay, like Nike, Reebok, Adidas. These are the brands, these are the chains जिनकी हर एक city में shop हैं. Okay, to close down, stop doing business, business को बंद कर देना. Fashionable boutiques. Fashionable boutiques means जहाँ पर fashionable clothes stitch किए जाते हैं या जहाँ पर fashionable clothes available होते हैं, तो उसको हम कहते हैं fashionable boutiques. To get around means to travel around. Next, high-rise flat, multi-story apartments. You can use this word while describing buildings in your town. एक क्यू कार्ड हमने आज किया है टाउन के ऊपर, उसके लिए आप ये वर्ड यूज कर सकते हैं. Inner city means the central part of the city. Okay, आपने अपनी बिल्डिंग बताई कि कहाँ पर वो बिल्डिंग है, आप बता सकते हो that building is located at the inner part of the city. That means center of the city or heart of the city. In the suburbs, the outer area of the large town, outskirts, जो बाहर के areas होते हैं उसको हम suburbs बोलते हैं. And cities where people live. Lively bars, restaurants with a good atmosphere. Local facilities means services that are available for the local people. Multi-story car parks. Multi-story car parks means with the several floors. Car parking having several floors. Office block means a large building that contains offices. A huge building that contains multiple offices, like a complex. उसे हम office block भी बोलते हैं. Out of town shopping center or retail park. Now what is a retail park? Large shopping centers outside of the town or city. That means shopping centers that are located in the suburbs of the city. Pavement cafe, cafes with a table outside on the pavement. Places of interest, buildings that have a particular interest for visitors. Buildings that have a particular interest for visitors, जहाँ पर एक खास तरह का interest रहता है, specifically for playing, for fitness, for shopping, for watching movies. That is the place of interest. Poor housing means housing that is not good in condition, where the living conditions are not good. Public space
Areas in a town or city that are open to the public. Public transport system. This is a very easy word. Public vehicles such as buses and trains that operate at regular time on fixed routes. Public transport system is the public vehicles such as buses and trains that operate at a regular time on fixed routes. Then next few words, residential area, an area where people live, society, जिसे हम कहते हैं, or you can also use the word community, run down, old and poor standard. That is not belongs to the contemporary era. Old or a poor standard. Shopping center, an area consisting of multiple shops, like a shopping mall. Shopping malls, large indoor shopping centers. Sprawling city, a city that has grown over time and which covers a wide area, जो expand होती जा रही है with the passage of time, and it contains a large area, a wide area. Tourist attraction, a place attracts tourists. Traffic congestion, heavy traffic makes it difficult to move around a town or a city. Upmarket shops, expensive fashionable shops. Upmarket shops means expensive fashionable shops, like a branded stores. Now let's move to the next type of vocabulary based on films and books. An action movie. Action movie is the movie basically with the fast moving scenes and containing some violences. To be engrossed in, that means to be completely focused on one thing. Engrossed in means किसी चीज के ऊपर पूरी तरह से concentrate होना, focused होना. Bedtime reading. Bedtime reading means something to read in bed before you go to sleep. Suppose you are reading your book before going to your bed. To be based on, to use as a model. To be a big reader. To be a big reader, it means someone who likes reading or he reads a lot. A box office hit means a blockbuster movie. That means a financially super hit film. To be heavy going, difficult to read. To be heavy going, difficult to read. A blockbuster, that is a commercial success. A blockbuster and a box office hit, one and the same thing. To catch the latest movie, it means to see a film that has just come out. That means a recent movie released just a few days ago. The central character, the main person in a film or book. The main person in a film or book. A classic. A classic is the highest quality. Classic of highest quality. That gives you a superior quality of something. Film picture. That gives you a highest quality. To come highly recommended, it means to praise by another person.
Highly recommended means someone is praising it a lot. Could not put it down. It means was not able to stop reading a book. Could not put it down. This is the phrase. This phrase you can use it while explaining your interest on reading books or novels. It means unable to stop reading a book. An e-book means a digital book. Digital book means where children can read online. An e-reader, a device for reading e-book. A device for reading e-book. To flick through, it means to look quickly through a book. To look quickly through a book. To get a good view. To get a good review or a bad review. It means to receive a negative or a positive feedback. Receiving a good feedback from someone. To go on general release. To go on general release. That means when a film can be seen by the general public. General release means when general public can watch the movie. Hardback, a book with a rigid cover. Rigid cover means Rigid cover book. A historical novel, a story set in the past. Historical novel means something that is set in the past. A low budget film. Low budget film means that made with a small amount of money. Means a movie in which only small proportion or small amount of capital is invested. On big screens, that means on cinemas or on theater. At a page turner, a book that you want to keep reading. A book that you want to keep reading. Plot, the main event in a film or book. Plot, a main event. That means a main suspense event or event with a full of suspense in a movie or a book. That is the main plot of the movie. To read something from cover to cover. To read a book from first page to last. Cover to cover means to go through with the complete reading of the book from first page, from the initial page till the last page, till the end. Sci-fic is a science fiction. That means where scientific technologies are used to design or to create a movie that we can generally see in the action movies. To see a film at cinema. The setting where the action takes place. To setting where the action takes place. Showing performances of a film. Showing performances of a film. Soundtrack means the music that accompanies a film. Special effect means visual or sounds that are added to the film which are difficult to produce naturally. Background music, you can say, that cannot be naturally designed, but
It can be designed by adding some visuals and some sounds in a film that is generally difficult to create naturally. To take out means to borrow a book from the library. Take out a book from library, that means borrowing something from library. To tell the story of, that means to give the outline of the film to someone else. To tell the story of, that means giving a brief information of the film or the story of the film. So these are the few vocabulary words which you can use for town and city or movies and films. So today we have done 5 cue cards on different topics along with some important vocabulary words based on towns or city and books or films. Okay, so I hope you learned a lot of things from this live session. You can ask me anything if you want, or those who are watching this video online on YouTube can ask me any doubt or query by giving your comment on comment box. This is all about today's live class. I will continue this live class tomorrow with the writing session and some of the important vocabulary words that you can use for the particular type of writing task 1 and 2 as well. Bye-bye for now. See you tomorrow. Okay, ma'am.